Well, good afternoon and welcome back to Moneycontrol live stream. You're watching Closing Bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Well, indices closing on a bearish note today, and despite bulls having regained some of their footing, however, they still seem to be trading cautiously given that global macros are not yet in their favor so far. Well, second line shares were under pressure today compared to front line shares. So overall, the market closed weaker, but the selling pressure was more severe in mid and small cap shares. In sectoral trends, you had shares from the IT, banking, metal and realty sector doing fine. However, shares from the auto, pharma and FMCG sectors were under pressure today. The India Volatility Index, which is also known as the fear index, closed slightly lower, but it's still above the 15 mark. And among the key gainers today in the Nifty, you had Hindalco, which continued to stand firm in a falling market for the second consecutive day. Sun Pharma being the notable exception to the downtrend in pharma shares that finished among the gainers today, and HDFC Bank, which was up by close to about 1.5%. Among the losers, you had Airtel, on which Yatin will be saying more in a short while from now. Divi's Lab and Cipla were also among the losers today. And in the FNO section, you had build-up of long positions being seen in Tata Motors, Hindustan Copper and Zydus Life for the second day running, and short positions being built in Adani Enterprises, PNB and City Union Bank, also Intellect Designs for the second day in a row. And you know, Adani Enterprises and Adani Group stocks have been off lately under pressure, Santo. देखा है हमने कि जो इनके FPO के प्लान्स हैं, फंड रेज के प्लान्स हैं, उसके पहले स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड हो चुका है. जैसे सेंटो बता रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ देखी गई थी. ऑब्वियसली अगर हम आज बाजार की बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन कह सकते हैं कि आज बाजार का रहा. और सेंटो, इट इज़ मोर टू डू विद द फैक्ट दैट आज US का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, और वो इन्फ्लेशन डेटा के पहले मार्केट बहुत ही एक टाइट रेंज में चल रहा था. शायद इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, FI एक्टिविटी काफ़ी स्लो थी. तो शायद मुझे लगता है बाजार को एक फियर है कि एक बार इन्फ्लेशन डेटा निकल जाए फिर देखेंगे क्या करना है बाजार में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट अभी डेटा है जो मार्केट एवरीडे ट्रैक करता है. Well, one thing we could say is that the kind of numbers you were seeing till a few months back, definitely that's unlikely to be the case. Inflation does seem to be under control for now, but the big question is whether it will start easing, because there's also a school of thought that inflation may stay high for long, which will probably prompt the Fed to keep interest rates higher for long. With that, let's quickly move on to the stocks that caught our attention this afternoon, beginning with Interglobe Aviation. This was one of the gainers in trade today, up by close to about 3%, and the stock closed above the 2100 mark. Now, Yatin, very clearly here, the fall in crude prices is helping not just Interglobe Aviation, but also aviation sector in general. But the fact that Interglobe is the market leader, clearly it stands to benefit more than other players. Now, a few other factors also in favor. Probably, Yatin, I think there is some bit of buying happening ahead of the third quarter numbers, given that third quarter is seasonally a strong number. The sector did go through some issues there. It was facing supply chain management issues, because of which flights had been curtailed, but towards the end they did manage to overcome that. So probably at this point in time, some traders betting that there could be a surprise in terms of the third quarter numbers, and that's why you're seeing some kind of a run up in the stock. Correct. And you know, today IFL was also of that opinion, Santo, that Interglobe Aviation is one stock you need to keep on your buy radar. Obviously जो factors हैं, जैसे कि सेंटो बता रहे थे, Q3 में जो पैसेंजर डेटा है, पैसेंजर लोड फैक्टर है, दैट वाज मच हायर देन द प्री कोविड लेवल्स. तो शायद बाजार को नतीजे पसंद आएंगे. और एक बात तो एविएशन में तय है कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम घट रहे हैं, जो कि एक मेजर कॉस्ट होता है कोई भी एयरलाइन चलाने का, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिल रही है. टिकटिंग प्राइसेस जो हैं वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं. अगर आप बॉम्बे टू दिल्ली का टिकट देख लें या बॉम्बे टू चेन्नई का टिकट देख लें, तो काफ़ी हाई लेवल्स पे आपको वो वीकेंड्स पे या ये छुट्टियों वाले दिनों में दिखेगा. तो कहीं ना कहीं जो टिकटिंग प्राइसेस है, रियलाइजेशंस हैं, वो इम्प्रूव हो सकते हैं, और इसीलिए यील्ड्स इम्प्रूवमेंट के जो थीसिस है
उस पर सैंटो भी कह रहे हैं कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भी है और ब्रोकरेजेस का इंटरेस्ट भी स्टॉक में बना हुआ है। Well, very clearly, despite the high prices, I think fares on an average would be not less than 30 to 40% higher over the last 6 months. And if you still go to the airports, it's chock a block. बिल्कुल, and you know, we saw that in Delhi T2 T3. I don't know which terminal, but I think it was T2 or T3 wherein the एविएशन मिनिस्टर उनको खुद को जाना पड़ा सिचुएशन कंट्रोल में लेने के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी थी इस दिवाली सीजन और इस छुट्टी वाली सीजन में। लेकिन सैंटो गियर शिफ्ट करते एविएशन से आते हैं टेलीकॉम पे, क्योंकि आज जो फोकस रहा है बाजार का वो रहा है भारती एयरटेल पे। आज एक गैप डाउन के साथ भारती एयरटेल की शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट कर दिया है भारती एयरटेल को, डाउनग्रेड किया है और टारगेट रखा है 710, यानी जो प्रीवियस क्लोज था उससे लगभग 10% की डाउनसाइड जेपी मॉर्गन को लगती है भारती एयरटेल में होनी चाहिए, सिंपली फॉर द फैक्ट दैट भारती एयरटेल जो है वो एक फैक्टर इन कर रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन, क्योंकि एक टैरिफ हाइक बाजार ने बिल्ड इन किया हुआ है। जेपी मॉर्गन को लगता है कि 2023 ईयर में देयर कुड बी हार्डली एनी टैरिफ हाइक, क्योंकि जैसे ही जियो रैंप अप कर रहा है, कंपटीशन रैंप अप कर रहा है, 5G की प्राइसिंग आपको फाइन ट्यूनिंग नहीं करने मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनीज ये चाहते हैं कि 5G एक बार एक्सेप्ट कर ले कस्टमर, फिर प्राइस हाइक के बारे में सोचेंगे। तो मार्केट अभी फैक्टर ये कर रहा था कि शायद प्राइस हाइक पहले होगा, कस्टमर ऑन बोर्डिंग बाद में होगा, कंपटीशन ईज होगा, लेकिन ऐसा कुछ सेक्टर में हो नहीं रहा है सैंटो। Well, also Yatin, there could be some bit of profit taking also, considering that the stock has had a very good run up over the last 12 to 14 months. It's been moving up all the way from 500 rupees. It's seen a high of roughly about 850 rupees, and some bit of profit booking is also only to be expected. But at the end of the day, it's still more or less a two-player market. Yes, there are three players, but the dominant players are just two. So the pricing power to a large extent should be there. And again, if you look at Bharti Airtel, the Africa operations too are now beginning to show some signs of real growth there. The numbers are improving on that front also. But this has never been a stock which you could measure on the traditional valuation parameter. The PE has always remained high. There has been periods when the company had been posting losses, but the stock price still remained at elevated levels. So this is a very different kind of play, and I think the fact that there is going to be only two players in this field, two big players in the foreseeable future, anybody wanting to take an exposure to telecom stocks will still, a pure play telecom stock that is, will still have to come to. That is what I think works in favor of Bharti Airtel at this point. Yes, and in 2022, I think the stock returned 15-18% to investors, wherein the market or the Nifty was up only 5%. तो एक आउट परफॉर्मेंस तो भारती में देखा है, शायद ये डाउनग्रेड के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई, क्योंकि एक बहुत रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं आज स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, तो शायद ये एक टेम्पररी फिनोमिनन हो सकता है। Well, MCX is the next stock on our watch list. The stock has been under pressure of late, largely due to an underweight rating by brokerage house Morgan Stanley. Now, the reason for Morgan Stanley coming out with an underweight rating on the stock was that the new software platform, which was supposed to have been operational this quarter, that's got delayed by 6 months, and MCX has had to extend its vendor arrangement with 63 moons. That is expected to increase the operating costs for MCX. Besides that, the November average daily turnover value also showed a slight decline month on month, but at the same time, Morgan Stanley has also said that overall the average daily turnover value has been showing an uptrend for the past few months. November was an aberration. The concerns that probably the STT could lead to lower futures volumes, that has been to a large extent offset by a lot of action shifting to the option side of the market. Turnover there has been fairly high. So again, this is almost a monopoly in this sense, the only listed play as far as commodity exchanges go. So there is a scarcity factor again here at play. So probably like what you saw in the case of Jubilant Foodworks for a long time, when it was the only game in town, right? So downside could be limited, although one needs to see whether the stock can once again regain the high that it had seen last month. The stock is still down by a little over 10% from its record high. बट MCX का एक कहना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे आया है तो शायद टर्नओवर उसकी वजह से कम हो जाता है, वॉलिटिलिटी जितनी कमोडिटी में ज़्यादा होती है शायद MCX को उसका फ़ायदा होता है। लेकिन सैंटो, क्योंकि क्रूड अब साइडवेज हो चुका है, गिर रहा है, गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी एक्शन मिल रहा है, तो शायद वो भी एक वॉल्यूम को हेल्प करेगा, क्योंकि इनके पास गोल्ड में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं,
तो हर टाइप के पार्टिसिपेंट यहाँ आपको सौदा करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और आई थिंक सेबी ने एक बॉन्ड इंडेक्स की भी मंजूरी दी है, तो शायद देखना ये होगा एनएससी पहले लॉन्च करता है, बीएससी पहले लॉन्च करता है, एमसीएक्स इस सेगमेंट में पहले आता है कि नहीं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में एमसीएक्स को फेवर कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स ये अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। वेल ये तो बात हुई भारती एयरटेल, एमसीएक्स और इंटरग्लोब एविएशन की। लेकिन आखिरी स्टॉक जो मेरे रेडार पे हो, मैक्स फाइनेंशियल। कल आपने देखा स्टॉक लगभग 4% ऊपर था, आज भी लगभग डेज हाई पे बंद हुआ। जब मार्केट काम नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है कि मैक्स फाइनेंशियल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक कारण ये है कि एक्सिस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये इन्फॉर्म किया है कि मैक्स फाइनेंशियल की जो सब्सिडरी है मैक्स इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ अपना वो जो फॉर्मूला है टू वैल्यूएशन उसको बदली करेंगे। फ्रॉम कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है उसको बदली करके अब कैश फ्लो मेथड पे उसको वैल्यू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 700 से 1700 करोड़ तक के वैल्यूएशन में डिफरेंस आ सकते हैं। हायर साइड पे अगर आप देखें तो शायद मैक्स फाइनेंशियल को अपने इंश्योरेंस बिजनेस के बुल केस में 1700 करोड़ रुपए एडिशनल आ सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएशन मेथड चेंज हुआ है। और 1700 करोड़ काफ़ी एक बड़ी धनराशि मानी जाएगी इनके फाइनेंशियल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। तो ये देखा जाएगा कि किस हिसाब से वैल्यूएशन आगे चलते हुए रेगुलेटर अप्रूव करते हैं, क्योंकि आईआरडीए ने एक रेड फ्लैग किया था पहले। जो रिकमेंडेशन है आईआरडीए के वो शायद एक्सिस बैंक ने अब अप्रूव कर दिए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। Well, technically, you're seeing some fair bit of action in the stock over the last 1 month. Volumes have been quite high, and that's also reflecting in a 25% up move in the stock. And this apart, the overall sentiment for insurance plays, that also has seen a major improvement. The market is now of the view that insurance stocks have underperformed for far too long, and the valuations have come to a point where the downside appears to be, the risk reward ratio clearly appears to be in favor. Maybe that's also one thing working well for Max. Absolutely. Well, and with that we wrap up this episode of Closing Bell. Thank you for watching. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ और मनी कंट्रोल के साथ। And we'll be back again with you tomorrow at 9 AM.